माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, papers to be laid on the table. Shriman Pratap Rao Javdao. माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित विषय से संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। श्रीमान श्रीपद यसो नाइक। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 1 ख पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। Dr. L. Murugan. Respected Chairman, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Pankaj Chaudhary, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 1 class C of today's revised list of business pertaining to the Ministry of Finance. Srimati Anupriya Patel. Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 1D in the revised list of business for today. Shriman Chandanu Thakurji. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name, the serial number 1D, on today's revised of business. Thank you. Shri Harsh Malhotra ji. माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक 1F पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। श्रीमती निम्बूबन जयंतीबाई बम्बानिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1G पर अपने नाम के आगे उल्लेखित कागजात हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूं। धन्यवाद। Report on the department related parliamentary standing committee on education, women, children, youth and sports. Dr. Chikandar Kumar. Sir, I rise to present the 372nd report on review of schemes for education, loan and financial accessibility in higher education pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence, Shriman Mujibullah Khan ji. Sir, I rise to lay a copy each of the 15th, 16th, 17th and 18th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Defence as listed against my name in today's list of business. Statements of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj, Shriman Iranna Kadadi. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति की गई कार्रवाई प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आगे की गई कार्रवाई को दर्शनी वाले की गई कार्रवाई विवरण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment, Sri Rameshwar Teli. Sri Ramji. Sir, I rise to lay on the table a copy each of the 14th, 15th and 16th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment 2025 and 26 as listed against my name at serial number 05 in today's list of business. Thank you. Statements of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Water Resources, Srimati Seema Trivedi. आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख जल संसाधन संबंधी अस्थायी समिति के अंतिम कार्रवाई के वक्तव्यों को सभा पटल पर रखती हूं। Statement by Minister Sri
Pratap Rao Yadav. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आयुष्मान भारत का कार्यान्वयन के संबंध में विभाग संबंधी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 191वें प्रतिवेदन और की गई कार्रवाई संबंधी 159वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। I have to inform members that a communication has been received from Sri Harbhajan Singh Ji, member stating that he is unable to attend the sittings of the current 269th session of Rajya Sabha from 1st December to 19th December 2025 due to some prior professional commitments. Does he have the permission of the House for remaining absent from 1st December to 19th December 2025 during the current session of the Rajya Sabha? Permission to remain absent is granted. Matters raised with permission.